Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna. Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. Jayo Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jayo Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadramai, Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Gaura Haribol. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamshta Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpat Sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ram, Ram Ramo. Loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Ram Rama Rama. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm very grateful to all the devotees for coming to encourage me and hear about the sweet pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. महाप्रभु की लीला सुनने के लिए सब उत्सुक हैं। बताया गया कविराज गोस्वामी बोलते हैं, he says, जय जय श्रोता गण, बोलिए, तान सवार पद रेणु मोर मस्तक भूषण. Yes. Anybody understands the meaning? इसका मीनिंग क्या हुआ? जय जय श्रोतागण, क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब all glories to, means me or you? Yes, all of you, headed by Anirudh Prabhu, you know. जय जय श्रोतागण, तान सवारा पद रेणु, मतलब the dust of their lotus feet of the audience. Mora mastak bhushan means for the speaker should take the dust of the feet of the audience. Yes. So please get ready now. You have to pay tax, Baba. आजकल कुछ free में नहीं होता, GST भरना पड़ता. This is actually the consciousness we should have. ये हमारी भावना होनी चाहिए लेक्चर देने के लिए कि I am the servant of the audience. I am the servant of the servant. I am servant of the servant. So जब ये भावना होगी, then Krishna will manifest to the tongue of the devotee, and he will manifest in the heart of the audience. So we have such exalted devotees in our parampara, like Kaviraj Goswami. Kaviraj Goswami बोलते हैं, जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ट, पुरीश्वर कीट है ते मुई से लघिष्ट. I am lower than जगाई and मधाई. मैं विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से ज्यादा गिरा हूँ, जगाई मधाई से भी गिरा हूँ. And Prabhupada says, not only he was speaking like this, but he felt like this. ऐसा नहीं खाली वो बोल रहे हैं, उनको हृदय से लगता था. अभी हम भी बोलते हैं, हरि बोल, कौन बोल रहे हैं? आपका सेवक बोल रहा हूँ. ठीक है, आ जाओ किचन में, सेवा करो, सब्जी काटना है, बर्तन से बर्तन साफ करना है. तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं. अरे अभी आपने बोला ना मैं सेवक हूँ, वो मेरी नम्रता है, इसका फायदा मत उठा. वो तो वैष्णव एटिकेट है, बोलना होता है, साइन करना योर सर्वेंट है. लेकिन सर्वेंट बनना कितना मुश्किल कार्य है. सर्वेंट नहीं बनना चाहते, इसीलिए दुनिया में आए. हम आए क्यों दुनिया? Why did we come to this world? Remember when I was applying for admission to colleges in America few years back, just 35 years back, 30 years, 1984. So there were big colleges and small colleges. Big college like Stanford or Purdue University, UC, California. You've been to abroad, no? US? Yeah, बड़े बड़े universities and small colleges. तो मेरे एक मित्र थे, वो छोटे छोटे कॉलेज में अप्लाई कर रहे थे, बड़े में नहीं. मैंने से पूछा क्यों, वाई? बोले देखो, स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है नरक में राजा बनो. This is the material mentality, you know. Everybody wants to be the king. And then that time I was initiated devotee, but not so serious. But now I understand Krishna consciously.
This is exactly the reason why we have come to the material world. भौतिक दुनिया में क्यों है, हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है, अपने एरिया का, अपने ब्लॉक का, हर व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, या और कुछ बिल्डिंग का चेयरमैन, सोसाइटी कमिटी, टेम्पल प्रेसिडेंट या घर के प्रेसिडेंट, आश्रम में सीनियर बनना चाहते हैं. एवरीबडी वांट्स कंट्रोल. राधानाथ महाराज बता रहे थे साउंड सिस्टम का भी इंद्र बनना चाहते है ना, या कई बार किचन का कौन सी सब्जी कटेगी वो मैं बोलूंगा वही होगा. जगन्नाथ जी क्या खाएंगे वो मैं डिसाइड करता. जगन्नाथ जी डिसाइड करते हैं रिमोट में, लेकिन मेरे द्वारा ही प्रकट होते. सो दिस ऑफ कोर्स समटाइम्स फॉर सर्विस we have to take that this role of leadership, but to become anything other than servant of servant is to invite one's own downfall. अपने आप का पतन है ना. Be very humble, be an unknown servant. किसी को पता ही नहीं. जैसे दुखी अभिषेक में मदद कर रहे थे, ऐसा नहीं कोई लास्ट में थी और उसको पता था अभी कैमरा मेरे ऊपर आने वाले, डालो अभिषेक डालो. कभी हम सेवा करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैमरा में जा रहे हैं कि नहीं, यूट्यूब पे जाना चाहिए, है ना. बट रियल डिवोटी डज नॉट वांट, ही वांट्स कृष्णा टू नो. हमें कृष्ण को मालूम है. अभी कोई माता के पीछे फूल माला बना रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होगा. भगवान जब गले में डालते हैं उनको मालूम, ये वाला फूल इस डिवोटी ने डाला था, है ना, ये वाला सब्जी जो उसने काटा था, ये वाला महाप्रसाद का कण उसने खाया था. Krishna knows everything, and we are trying to please Krishna. We are not trying to become popular. प्रगति करने का रियल मीनिंग है कि हम बस सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बने रहे. इंटरनल टेस्ट आने. भक्ति हम क्योंकि हम इंस्टीट्यूट में हैं तो हम वैसे करते हैं ग्रुप में, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ प्रोमिनेंट पर्सन इन द ग्रुप. फॉर प्रैक्टिकल रीजंस वी स्टे टुगेदर टू इंस्पायर ईच अदर. अदरवाइज real bhakti is from the heart. Yesterday I was telling the story of Narsi Mehta. Narsi Mehta कैसे भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे. भगवान कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं उनके ऊपर. He was totally dependent on the Lord. ऐसे एक और सेंट है तुकाराम महाराज. भक्तों की महिमा सुनना बहुत लाभकारी होता है. To hear about devotees is even more pleasing to Krishna than to hear about Krishna directly. That's like our Aniruddha Prabhu. Your son is in Hyderabad, right? What is his name? Abhijit. So if I glorify Aniruddha Prabhu, wonderful activities is बहुत अच्छी सेवा की बलराम देश में, बलराम देश राइट, और यहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं, तो okay, he feels good, no problem. But if I glorify his son, he'll feel more happiness. Right? Natural है, everybody likes. तो कृष्ण का गुणगान करते हैं तो कृष्ण खुश होते हैं. जब कृष्ण के भक्तों में गुणगान कर, कृष्ण becomes even more happy. कृष्ण के भक्तों में गुणगान कर रहे हैं और आप सो जाते हैं तो कृष्ण को बहुत खराब लगता है. नहीं, आई एम स्पीकिंग अबाउट Abhijit, the son of Aniruddha Prabhu, a wonderful person doing service in Hyderabad. Another person, you feel so depressed. So Krishna also feels great happiness when we listen with great attention, eagerness. That eagerness is the price for attaining love for Krishna. Tatra laulyam api mulyat. Intense greed. Intense greed. ऐसे तरसना चाहिए. कब नेक्स्ट क्लास कब हो रहा है, कब होगा नेक्स्ट क्लास, यू नो. राधा गोपीनाथ टेम्पल में परम पूज्य राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे ना. द टेम्पल कैपेसिटी इज अराउंड मैक्सिमम 700-500 पीपल एंड 5000 पीपल वांट टू अटेंड. तो संडे महाराज का क्लास शुरू होता है 9 बजे, 4:30 से लोग, अब मंगल आरती के बाद कोई उठता ही नहीं है. तुलसी पूजा यानी नीचे पापा नहीं, उधर बैठे बैठे. महाराज को जाना है गुरु पूजा के लिए, कोई उठ नहीं रहा, घूम के जाओ वहां से. राधानाथ महाराज सिटिंग हियर, ही हैज टू गो टू प्रभुपाद, ही हैज टू गो अराउंड द टेंपल. सब डिटर्मिनेशन से बैठे हुए हैं. महाराज का समझ में नहीं आया कि बाद में मैंने महाराज को बताया दे आर वेटिंग फॉर लेक्चर. 4:30 से माता जी ब्रदर गोपीनाथ चंद्र प्रभु, ही जस्ट सिट्स लाइक स्टैचू की तरह. कभी देखना पड़ता है यदि स्टैचू है कि कोई. ही सिट्स सो विद सो मच अटेंशन.
Same brother, sister, same eagerness to hear. That eagerness is the price. And devotees coming from Pune to Bombay to here. Bombay devotees ज़्यादा, Pune devotees पहुंच जाते. Bombay वाले 7 बजे निकलते हैं, 7:30 बजे हाउसफुल. Pune वाले 1:30 को निकल जाते हैं वहां से. मंगल आरती से पहले अंदर रहने. और जब मंगल आरती के बाद जब बैठते हैं ना सब, it's like बॉम्ब गिरा, कोई लटक गया था बीच में. He is out. That is eagerness, you know, the good quality. You have that eagerness. You can have darshan of Krishna today. आज ही कृष्ण मिल सकते हैं. आपके अंदर उतना eagerness है. Bilo Mangal Thakur story, you know. Bilo Mangal Thakur was so attached to the prostitute. वेश्या से मिलने जाते थे. इतना उत्सुक थे. एक दिन पिताजी का श्राद्ध था. Not common glass. No? It's not common. Pune also, it's very hot today. I was very 40 there. So far India में Bangalore is the best climate. पूरे जन्म में आपने पेड़ लगाए थे, कुआं खोदा था, इसलिए so you get there staying in Bangalore in the month of May. Hare Krishna. I'm seriously thinking next week for निर्जला के लिए आना चाहिए यहाँ पे, you know. It is win-win situation for me also. I also get benefit. Bilo Mangal Thakur was so attached. श्राद्ध के समय भी वो नदी पार करके गए, डेड बॉडी को पकड़ के. तो फिर वो वेश्या ने उनको बोला, you are so foolish. We are attached to this dead body. Body is always dead actually. Soul makes it alive. You want to enjoy this bag of bone and stool and urine. इतना आप शरीर को भोग करना चाहते. If you had that much desire to serve Krishna, then your life will be successful. सुन के he became so, he left everything, rushed toward Vrindavan. So we see in the life of all great devotees that certain incident takes place which makes their progress go faster, become like a catalyst. So a very nice example is given that, like you know what is blacksmithy? In engineering में blacksmithy workshop, iron को mold किया था. With iron I want to make a tongs lifting something or something, some shape. So to heat the iron, लोहे को गर्म करना पड़ता है, and then you just take a hammer. You studied engineering? You had this blacksmithy? You had also? Very, very difficult thing for me to do. You know? I wanted to do electronics thing. ये पकड़ के हथौड़ा मारना है ना. I was feeling वो जो इंचार्ज उसको ही मार देंगे. Because everything हर बार जब किया ना बोलते ऐसा नहीं, फिर और एक बार मारो. You know, till वो 8 to 12 workshop होता था 4 घंटे का. And I would finish my work in 3 hours, but he would make me sit till 12 o'clock. You know? कभी कुछ होता है कर्म में से, उनको घर जाने का इच्छा नहीं होगा, झगड़ा हो गया होगा. Students को भी. It's so difficult workshop. You liked it like that, hammering, you know. Yes. So उसमें एक रहस्य है. नहीं चलेगा, इसमें ले लिया. You could not find that bag, ना? नहीं मिला. Blue color bag है. कोई बात नहीं. Find it. Krishna will arrange. So material miseries are like fire. You see, if you take that iron and start hitting when it is cold, it will not be so effective. लोहे को गर्म करो, फिर हथौड़ा मारो तो शेप होता है. ये मटेरियल मिजरीज आते हैं हमारे लाइफ में, वो अग्नि की तरह. और जब वो मटेरियल मिजरीज आते हैं, फिर कोई लेक्चर सुनते हैं, साधु को एजेंडा ये रजिस्टर हो जाते हैं. तत्व अनुकंपा सुसमय से. ऐसा कोई अच्छा था तो हैप्पी गो लकी होते. वो वेरी नाइस कृष्ण chanting, dancing, feasting. But when Krishna gives miseries, then you become more determined. Maharani Kunti, she is our guru. And the sadhu, sannyasis,
They worship Mother Kunti because she's personification of this verse Satyanukam. She's thanking the Lord. She says, Vipada Santu Shasha. Tatra Tatra Jad. That calamities come upon me again and again. फिर से दुख है. Kunti Maharani is not a साधक भक्त. बाकी तो साधक भक्त होते हैं तो उनको तो मिजरी आना नेचुरल है. She is pure devotee. She is actually associate of the Lord. The 5 Pandavas, they are coming in Gaur Leela also. 5 Pandava हैं, Yudhishthir, Bhim. What are their names? Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev. और गौर लीला में क्या बन जाते हैं? In Gaur Leela, what role they take? Huh? Not Bhavananda Rai. Ramananda Rai. Ramananda Rai is Arjun, yes. Who is Bhimsen? Bhimsen क्या बन जाते हैं? It is not mentioned, but my guess is Vaninath Rai. Vaninath Rai used to bring prasadam. Bhimsen ने हमेशा प्रसाद डिपार्टमेंट लिया. जब वो अज्ञातवास में थे ना, अज्ञातवास, the incognito, na? They stayed 1 year. Some people say it is near Hubli, someplace. There's one Hangal, one village called one place Hangal. And some say it is in North India, where Virat Nagari. The 5 Pandavas were staying there. So at that time, they were to be assigned different duties. Arjuna was acting like a dance teacher, music. और डांस टीचर उत्तरा को सिखाते थे. अब भीमसेन ने कौन सा डिपार्टमेंट लिया मालूम है आपको? किचन. क्यों? किचन डिपार्टमेंट जब चाहिए खा सकते हैं. नहीं, किचन डिपार्टमेंट हैज गॉट द इंचार्ज हैज गॉट द कीज टू द प्रसादम हॉल आल्सो, बाय डिफॉल्ट. So Vaninath Rai became Bhimsen, and Gopinath Patnaik is, I mean, it's not exactly sure. I'm just guessing. Ramananda Rai is Arjuna, but from the order it appears that Gopinath Patnaik could be Yudhishthir, and Kalanidhi, Sudhanidhi sounds similar, so Nakul said. But it is sure that the father of the 5 Pandavas, the 5 Pandavos के पिताजी हैं, वो कृष्ण लीला में कौन थे? पांडवों के पिता महाराज पांडु. He becomes, and गौर लीला में क्या बन जाते हैं? Bhavananda Rai. Once Chaitanya Mahaprabhu spoke like this. Chaitanya Mahaprabhu told me, Bhavananda Rai, you are Pandu, Pandu, and your 5 sons, they are Yudhishthir Bhim. So, now we find even 5 Pandavas, they also had to undergo difficulties. Why Krishna? For me and you, it is understandable. Krishna is giving difficulties to purify us. लेकिन ये तो शुद्ध भक्त हैं. ये तो उनके टीम के जो 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, ऐसे 5-6 लोग हैं. ये 5 पांडव हैं, द्रौपदी, कुंती, and Maharaj Pandu. They are like sent by the Lord. It's not that they are grahasthas, mean they are fallen. Sometimes people think that Yudhishthir, that Arjuna, that Mahabharata में बोलते हैं Draupadi was attached more to Arjuna. But actually this is material thinking. Pandavas, they went back to Godhead. महाभारत में बोलते हैं स्वर्ग में गए, एक्चुअली वो गोलोक में गए. उनके मन में कोई विचार नहीं था. They could not forget Lord for one moment. The great souls like Madhva's followers, they comment on Mahabharata. Mahabharata is not ordinary. Therefore, it is simple to understand, but it's also transcendental. Because topics about devotees are as good as topics about God. Bhagavat means Supreme Lord is called Bhagavat, and devotee is also called Bhagavat, and Pustak Bhagavat. So Bhagavat Seva means serving devotee, serving pure devotee, serving the mission of the Lord. They are related. The 5 Pandavas, they travel left and right, up and down. I was in a place called Goa. In Goa, devotees were telling me, Goa में भी कई जगह जहाँ पांडव आए थे. Maharashtra में भी, Daund. Here, Pune, there's a station called Daund. When you go by Karnataka Express, Daund station. Daund, वहाँ भी पांडव आए थे. Wherever Pandavas went, that became holy place. और राड देश बोलते हैं. राड देश means the place where the Pandavas did not go and where the Ganga does not flow. That is considered inauspicious.
Of course, Chaitanya Mahaprabhu went, he made inauspicious places into auspicious. Chaitanya Mahaprabhu Udupi gaye, and he went to Srirangam, and he went to Kumbakonam, and where else? Near Bangalore, any place? Tirupati. Tirupati गए, उडुपी गए तो बैंगलोर से गए होंगे मोस्टली, ना? साउथ बैंगलोर से गए होंगे मोस्टली. Speculation. Like Pune, for example, is not mentioned. But Chaitanya Prabhu Bombay गए मानते हैं. Bombay is called Surparka, Thana district. Mahaprabhu went to Thana district, that is mentioned. And Mumbai was called Dvaipayani. Dvaipayani, it was an island. So that's mentioned. Chaitanya Bhagavad में बताए. So Mumbai गए, Pandharpur गए, Pune रास्ते में. In fact, that area, highways, the roads, is very near where the present ISKCON temple is. So Lord Chaitanya knew that I have to appear in 2013 year. So might as well prepare the way. And wherever Lord Chaitanya went, there we are finding preaching is successful. Jahan jahan Mahaprabhu gaye. And some people say Mahaprabhu went to Kurukshetra also. Bhaktisiddhanta Thakur says. Although in the maps it's not clear, because Chaitanya Mahaprabhu traveled once to Vrindavan, and once he went, and Vrindavan jate समय Varanasi and Prayag up and down, and South India. So Lord Chaitanya did not go to Kurukshetra apparently. But Bhaktisiddhanta Thakur says that Lord Chaitanya went to Kurukshetra also. He stayed at the house of a Brahmana and Thaneswar, Kurukshetra. But Yuvraj Prabhu यहाँ है क्या? Yuvraj Prabhu? Yuvraj Prabhu is one student from Uparaj, Kurukshetra. मेरा फॉर्च्यून था, मैं जब फर्स्ट सेंटर जब इंडिया में आया ज्वाइन किया कुरुक्षेत्र. एक्चुअली आई ज्वाइन राधा गोपीनाथ टेम्पल. आई ज्वाइन अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अमेरिका में वीजा नहीं मिला. मेरे को वीजा करना है तो एक ही तरीका है, आपको मैरिज करना होगा. so मैंने बेटर राधानाथ महाराज बोले ये सीधा साधा व्यक्ति, इसको इंडिया भेज दो. So he saved my life. What is the use of staying in America? Spiritually, there's nothing like India. West is good only for sense gratification or for preaching. Two reasons you should go to Western country. Either for preaching or for sense gratification. बाकी ऐसे आप जाओगे कि मैं भक्ति सुधारने के लिए, तो वहाँ के खाली नाटक हो जाता है वो. You become leader, and great devotees like Jayapatak Maharaj, Radhanath Maharaj, they go for preaching. But for going for just like that, it's not so much. So I was fortunate. So I came to Radha Gopinath temple, had just started. And the first Pune Yatra was there. Pune Yatra shuru हुई थी, second बार. A big group of devotees are going, मेरे को बताया. कितने? 120 devotees. 2 buses. मैं भी उसमें गया. और वहाँ पे मेरा प्लान था, I heard Radha Gopinath temple started. But Shukdev Maharaj, he was in charge of Kurukshetra. और उनके साथ जो भी रहता वो 1-2 साल में छोड़ देता. कितना difficult life. The Vrindavan Prabhu was staying with him and he had just left. So he wanted somebody. So he told Radhanath Maharaj that I want Krishnananda to come with me. You ask him. मेरे को mission दिया था. I was given the mission to find out all books on holy name by Kirtananda Swami. So I said, I want books on holy name. So he said, you come to Kurukshetra, we have nice library there. Kurukshetra गया था वहाँ पे. पता चला खाली टोटल 8 ही लोग हैं. 6 गौर नेता राधा कृष्ण, सुखदेव महाराज और मैं. 4 ऑल्टर पे 2 नीचे. इतना ऑस्ट्रियर था, so cold. At that time I was young and not so eager to get up. सुखदेव महाराज 3 बजे उठ जाते और वही रूम सोने का वही जप. उनका स्टाइल क्या था, उठने से स्नान करने से पहले 8 माला जप करते बिस्तर में बैठ के. और मैं जब लेटा हूँ और हरे कृष्णा कृष्ण. अभी क्या करूं मैं? If I get up, then I'm feeling sleepy. If I don't get up, I have to hear the mantra. Somehow I would get up. So, and it was very austere life. और हमारा एक डेली मेनू था मिक्स्ड वेजिटेबल. Every day we would go to the market and go to the market at 7:30 after japa and say, आज हमारे मंदिर में भंडारा है. भंडारा means feast. And they would give indiscriminately potato, brinjal, अभी गोभी, बैंगन, आलू, लौकी कभी मिक्स नहीं होता, सब मिक्स.
और साथ में राइस, मिक्स्ड वेजिटेबल। इसलिए मैं वहां पे रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे कोई मेनू का कोई परवाह नहीं है, जो भी दे दिया इज बेटर देन दैट। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे हम लोग वी वुड गिव पैम्फलेट्स वेयर आवर टेम्पल इज। सो वन सब्जी वाला ही केम एट 9 o'clock, ही सेड आप लोग भंडारा करते हो कहाँ पे, एड्रेस लिखे हैं, वेयर इज दैट, एंड यू वुड कुक ओनली फॉर द deities and for 2 devotees and little extra. Luckily some extra was there, so we said भंडारा खत्म हुआ लेकिन आपके लिए प्लेट बनाया. He was very happy. Next time he gave more sabji. And second time, first meal हो गया. Second time के लिए we would go to गुरुद्वारा का प्रसाद. तो कौन बनाएगा ना, गुरुद्वारे में गरम गरम रोटी मिलता है. Have you eaten in गुरुद्वारा? गुरुद्वारा में प्रसाद बहुत, क्वालिटी इज वेरी गुड. They cook with great devotion. Of course आजकल तो सब मैकेनाइज्ड हो गया. To go to Golden Temple में इतना बड़ा मशीन है. So many 6,000 rotis per hour. हरे कृष्ण. घर में बनाए तो मैक्सिमम 600 बना सकते हैं, टेम्पल में नहीं, पर आवर 6,000 रोटीज. ऑलमोस्ट लाइक कितना वो 100 रोटीज पर मिनट. बहुत सारे तवे, पैरेलल प्रोसेसिंग है ना. सो गुरुद्वारे में जाएंगे ना, एक कपड़ा डाल के जाना पड़ता है. To put a cloth. सुखदेव महाराज knew the people there and I was new, so मेरे को साथ में ले गए और जाते ही बोलने का सतनाम. That is a sign of respect, That sick person, he would come out and he had a small kirpan बोलते हैं इसको, that can be used for the sword, but many किरपान रखते और बोलते सतनाम. किरपान को देख के मेरे मुंह से निकलता सतनाम, आउट ऑफ फियर. इनका भरोसा इनका दिमाग भी है ना. You don't know, they are hot, many are hot tempered, So they would sit down in the line. But अभी क्या वहाँ सब्जी में प्याज लहसुन, कांदा लहसुन, so what to do? So they would bring some good for us. So he took me to one professor's home whose name was Anand, Professor M.L. Anand. South India we have these surnames like this, Like our Gaurang Prabhu's name was earlier A.S.K. Anand, surname Anand. तो वो इंट्रोड्यूस कराया कि ये है प्रोफेसर आनंद और ये है कृष्णा आनंद. So he was a PhD in chemistry. So Shukdev introduced that Krishnananda is MS from Rice University and I am, Shukdev Maharaj is a postgraduate from America, child specialist doctor. Oh, आप इतने बड़े लोग हो, आप इंजीनियरिंग वगैरह छोड़ के साहब भक्ति बन गए, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आई वर्शिप. सुखदेव महाराज बोले नहीं 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 नहीं, कृष्ण भक्ति इज द ग्रेटेस्ट थिंग. कृष्ण सबसे बड़ी है. You have abandoned that for small things, so you are greater renunciate. We have not given up everything. You are indirectly you are saying you are foolish. अब इंडिया में होके भक्ति छोड़ दे. Sorry, I'm diverting, but the point I wanted to make was that how actually Shukdev Maharaj, he taught me this vairagya jivan. Now any prasad is okay with me, as long as it is cooked. So because एक बार मैं साइकोलॉजिकल होता हूँ. जैसे अभी आज मैंने प्रॉमिस किया था गुलाब जामुन है, अब अगर नहीं होगा तो सब लोग मेरे को गौरहरी के पीछे आज बनाया क्यों, तो ये सस्पेंस रख रहे हैं. एंड हाँ हाँ, बट एक्चुअली भी आना चाहिए, नहीं तो लोग क्योंकि आप बहुत हाई लेवल पे हैं, so you can say like that. But at 5 o'clock I went and saw. In fact, they offered me also. 4 गुलाब जामुन लाए थे. आपने कितना, 2 खाया ना? एक ही खाया? Did not eat. It was ready at 5 o'clock. The Suvarna Gaur Prabhu is like Yudhishthir Maharaj. He is an honest person. He's not. If he says, he keeps his word. And now he's made gulab jamun. Next week rasgulla, like that. He doesn't have to make it personally, but yes, not once a month. Whenever there is this special japa program, we'll keep gulab jamun. और उस दिन दोपहर में ही बांटना चाहिए. जो जपा में लास्ट तक रुके उनके लिए गुलाब जामुन. अभी ये लोग इंटेलिजेंट है, they came just for the gulab jamun part. But I was very happy. I did not expect. More than 35 devotees chanted for 3 hours. और 12:30 के बाद मैं रूम में गया तो वहां पे जप करते रहे
और एक्चुअली आई हैड नॉट इवन टेकन ब्रेकफास्ट. मैं जाना चाहता, लेकिन मैं जाऊंगा तो बंद हो जाएगा. तो 1 o'clock, 1:30, and finally 2 Matajis and 1 Prabhuji was left. So I told Mataji, अभी प्रसाद लिया कि नहीं? बोले नहीं लिया. So how can I tell her, please आप जाइए, क्योंकि उसको लग रहा है. मैंने बोला मैंने भी नहीं खाया. So then finally I think very sincere Mataji and Prabhuji also stayed with me. So then I had to take massage and bath, and finally 5 o'clock I got my prasad. Because 3:30 को मेरा स्नान पूरा हुआ, and Gaur Suvana Prabhu told me there is a Zoom class going on. So he engaged me for 1 hour, and then it went on till 1.5 hours. I extended it. But that is good actually for sadhu. When we take inconvenience, difficulties, we make progress. We have time to time prasad milega, सब कुछ अच्छा रहेगा. Then progress is there, but difficulty is inconvenience. कभी आपने देखा एक one devotee is asking question, how to avoid feeling sleepy in japa after 7 hours of rest in the night? इस ग्रुप में how to avoid sleepy, नींद कैसे रोकना है. मैंने उसको पूछा कि मान लो आपको कुछ व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, that you are being paid monthly, let's say how much Nanda Charya, 2 lakhs per month. Good to hear anyway, you know. Whether it's true or not, Krishna knows, you know. And but you will be paid cash, not online, and you are asked to count the money. 2 lakhs means about 2,000 wale 100 notes, right? So imagine you are counting 1, 2. Is there any chance that you will fall asleep while counting? Generally, the eyes will come out of the sockets. That way, devotee feels Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. I was really overjoyed today. Almost how many? 30 devotees were there at 12:30. How many? 15, 20, 30. 25, 30 till some had to leave early. So I requested Prabhuji, you should make it once a month. Saturday is better, na? How many devotees prefer Saturday? How many prefer Sunday? The Sunday there are a lot of other programs going on also. Sunday is difficult, but Saturday we can do it. Anirudh Prabhu will take the responsibility of coordinating, because he likes to chant. It is actually, and this way we develop taste also by performing service. There is no service equal to the chanting of the holy. कोई सेवा बराबरी नहीं. आप मंदिर में 1 crore रुपए दान दे दो. If you give 1 crore donation, if you read Bhagavad Gita 100 times, to perform Ashwamedha Yagyas, and if you build big temple for the Lord, give beautiful lectures, these are all good things. ये करना चाहिए, but nothing can compare to the Japa Yagya. This is a Yagya. यज्ञ बाकी यज्ञ होते हैं, जैसे नरसिम्हा यज्ञ, होम यज्ञ, that is good, Sudarshan यज्ञ. But all these other yajnas, they're dependent, their power is dependent on the holy name. But sometimes क्या होता है, people don't have faith so much, so we have to do some dhua yajna also. If you do yajna like this, only sitting chanting, the devotees, newcomers cannot understand. So for them, we have a yajna where we light fire, then some smoke comes and fire brigade को थोड़ा लगता है, तो we had yajna. But otherwise, today what we did, that is yajna. Yajna naam, japa yajna usme. We should not judge things by how difficult they are. This is a sign of Kali Yuga. Kali Yuga लक्षण क्या है? दूरेण यावरम तीर्थ. तीर्थ मतलब क्या है? जब दूर होना चाहिए. हम गए उडुपी, 500 किलोमीटर गए, बस में थकावट हुआ, 1,000 rupees going, 1,000 staying, 1,000. We went for तीर्थ यात्रा. That is good. But the same result you can attain by sitting and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. This is Prabhupada's sentence. The result you get by going to all the holy places in the universe, that same result you will get just by sitting down in any part of the world and chanting Hare. कितना प्रभुपाद ने इसी बना दी. So, you know the story, Ashok Gaur Prabhu, that Prabhupada was taking sannyas. सुना है? प्रभुपाद संन्यास ले रहे थे, और वो कोई ऋषि मुनि जो उनके
जो डिवोटी यज्ञ कर रहे थे स्वाहा स्वाहा, कई बार मंत्र बोलते हैं मीनिंग भी मालूम नहीं होता, कई बार खाली पता था स्वाहा बोला है. And Prabhupada was not paying much attention to this mantra. His mind was towards Mahamantra. Prabhupada के गुरु भाई कीर्तन लीड कर रहे थे. His name was Akinchan Krishnananda Babaji Maharaj. Very sweet singer. Any program, Gaudiya Math, if he comes, they will hand over Mridanga to him. You lead Kirtan. So advanced devotee. He was on very high level of devotion. And Prabhupada was listening to his beautiful song, Hare Krishna, Hare Krishna. And Prabhupada told him, जब यज्ञ was going on, यहाँ पे लोग मंत्र बोल रहे थे, Prabhupada बोले जोर से, loudly. He said loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And then the devotee doing the yajna, he said, slow down. Slow down. And then Prabhupada looked at us loudly. So that devotee, Srila Bhakti, Akinchan Krishnananda Babaji Maharaj, said, that day I understood that this is the person who is predicted that he will spread the glories of the holy name everywhere. यही वही व्यक्ति हैं जो जा रहे पृथ्वी ते अच्छे जतन करा देगा. Can fulfill the desires everywhere. So we are so fortunate to be in Prabhupada's mission. One of the associates of Lord Chaitanya. Prabhupada says that this International Society for Krishna Consciousness is one of the branches of the tree of Lord Chaitanya. One other great devotee, he also, according to some records, he met Lord Chaitanya. And Prabhupada says his name is Tukaram, Santa Tukaram. Prabhupada says actually he was initiated by Lord Chaitanya Mahaprabhu. So there is some controversy because timings do not match. Tukaram Maharaj came much later. But Tukaram Maharaj is said to be initiated. Sometimes the initiation may take place without Lord personally coming, the heart also. Tukaram Maharaj's childhood, he was very great devotee. In fact, this place, Dehu, is so wonderful. Dehu Gaon, the place where I spend most of my time is Pune, Nigri, very close to Dehu, 8 to 10 kilometers. Has anybody been to Dehu? Dehu. You liked Haridev Prabhu? Dehu. You have been there, Mataji, Dehu? You have been? You should go to Dehu, it's very, because it is still somewhat like a village and very holy atmosphere. The birthplace of Tukaram Maharaj, and his grandfather's name was Vishwambar. And you must have been, no? Many times from Pune. Once Lord Shiva was traveling with his wife Parvati. Shivji Parvati ja rahe the, and his airplane suddenly started coming down. Generally his plane comes down wherever there are holy places. So it came down Devu. Just before, many years before Tukaram Maharaj. And Parvati asked, why is this emergency landing? She did not say like that. I am saying, why are we getting down here? हम यहाँ नीचे क्यों उतर रहे हैं? पार्वती ने पूछा. शिवजी बोले यहाँ पर कलयुग में एक महान भक्त आने वाले, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ. There is one Swayambhu Shivaling, Siddheshwar Mahadev. Swayambhu means not established, but अपने आप से प्रकट, like Swayambhu, like Radha Raman is Swayambhu Murti, not carved. Jyotirlingas, Kedarnath, Swayambhu. So since that time, this place has been existing. Tukaram Maharaj was apparently quite poor. His wife was not so much favorable. Avdi? Avli, na? They are not so favorable. You know, it is not that if you are a devotee, your husband or wife will automatically become a devotee. It may take time. And Prabhupada's wife was also, she was a devotee, but not so much into preaching mood. I mean, she could do such a thing. She sold all Prabhupada's manuscripts. That means it's an individual matter ultimately. Every devotee wants his
their spouse to be devotee, father to be devotee, children to be devotee. It changes. Generally, we think if father is devotee, son will be devotee. But we see sometimes Hiranyakashipu is there and son is Prahlad. And other way around also. When father is Prahlad, then son becomes Hiranyakashipu. All combinations are there. You know, Hiranyakashipu son, Prahlad father, Prahlad son, and Hiranyakashipu father. All come A B bar. एक बार मैं ऐसे एक डिवोटी घर में गया और इनका बेटा बहुत सुंदर श्लोक है 5 years old son whole भगवत गीता recited पूरा श्लोक गा लिया प्रभु जी आपका बेटा बहुत अच्छा है प्रहलाद की तरह है तो बहुत गुस्से हो गए बोले प्रभु जी वो प्रहलाद है तो मैं क्या हुआ फिर no I did not mean like that the Tukaram Maharaj case he was so attached to the deities. He would go to Pandharpur every year. And when he did not go, that year Lord sent Garudji. You know the story. Garudji ko bheja. Still he thought, no, how can I ride on Garuda? This is for my Lord. ये भगवान के लिए. कितना deep attachment है. Why we are not feeling that attachment? At least I am telling. उतना भगवान से attachment नहीं होता. ठीक है जगन्नाथ को हम ऑफिशियली प्रणाम करते हैं भगवान 8:30 बजे दर्शन बंद हो रहा है भगवान ठीक अटैचमेंट कभी आएगा लाइक what is that story Andal Chitta what is that name Chitta Chitta she would dress herself she would put we cannot imitate she would put garland around her neck and then put to the Lord you know but these are all eternal liberated persons but at least we can imagine we can pray भगवान मेरे को थोड़ा अटैचमेंट दो अदरवाइज क्या होगा ना हमारा भक्ति ऑफिशियल रहेगा लाइक न्यू कमर्स होता है ना डिवाइस कोर्स होता है आईवाइस होगा we'll bring new people we will you know get some credit they'll become devotees we will do some pujas but attachment राग डेवलप नहीं हो जब तक वो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी so gradually that same sadhana bhakti you have to intensify what is the difference between raga bhakti and sadhana bhakti same sadhana bhakti जब इंटेंस हो जाती है वो रागानुग बन जाती है अलग से नहीं एक मंगल आरती अभी अटेंड कर रहे हैं तो पहले बोलना पड़ता है उठो मंगल आरती में आओ प्लीज कम एंड थर्ड स्टेज नोबडी टेल्स यू स्टिल यू गेट अप वो बोलेगा आप सो जाओ आप लेट हुआ था अपने आप नींद खुल जाए that is gradually we have to come to that level otherwise we will just be official bhaktas you know like okay I am registered devotee I am initiated I am one of the counselors may I be important bhakt Tukaram Maharaj so he had faced so much opposition उनके इसमें बहुत से लोगों ने अपोजिशन किया उनके जो बुक्स है उसको नदी में फेंक दिया एक क्या था रामदास शास्त्री ना स्वामी शास्त्री क्या नाम था स्वामी शास्त्री और रामदास शास्त्री he was so envious कि ये क्योंकि तुकाराम महाराज ब्राह्मण नहीं थे शुद्ध है ना वैश्य यस ये वैश्य होकर हमें सिखा रहे हैं तो उनको बोले बंद करो किताबें लिखना तुम और वो राजा का सपोर्ट मिली मतलब ऐसे भगवान अरेंज करते हैं सब डिवोटीज को अपोजिशन से गुजरना पड़ता फायर बिकम्स आई एम सॉरी गोल्ड बिकम्स मोर इल्यूमिनस इन फायर जब सोना को अग्नि में डालते चमकता जाता तुकाराम को कितने ट्रिबुलेशंस ये बुक्स को फेंक दिया इट वाज द ओनली थिंग ही हैड एंड ही वाज जस्ट सिटिंग ऑन अ स्लैब एक पत्थर पे बैठ के बस भगवान का नाम ले रहे हैं जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल 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 पंढरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 विठ्ठल
Vithala, 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 Vithala. 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 Jai Jai Ram Krishna Hari. Jai Jai Ram Krishna Hari. Jai Jai Panduranga Hari. Jai Jai Panduranga Hari. He was constantly absorbed. मग्न रहते थे. Apparently he was poor. भगवान भक्तों गरीब बनाते थे. गौर गोविंद महाराज also. गौर गोविंद महाराज जी बचपन से at the age of 12 he had read Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Mangal. इतने powerful थे. फिर वो गरीब परिवार में. जीसस क्राइस्ट का भी जन्म हुआ एक स्टेबल में, नहीं. It was like a horse's play. तो कृष्ण भगवान से अपने डिवोटीज की महिमा को कंसील रखते हैं. Nobody can understand. So Tukaram Maharaj was given, there was no money. He had a family. Sometimes his children would be almost starving. इतना कष्ट था. Somebody was a jamindar, landowner who had farm. He said, okay, I'll give you a job. आपको थोड़ा पैसा देंगे, आपको supervise करना होगा खेती को. You know this story, no? How many of you know this story? Okay. How many do not know this story? Okay, almost 50-50. So he was just supervising. It would just be there, make sure no birds, animals, कुछ खा के नहीं जाए खेती को. और वो बस बैठ के भगवान का स्मरण ही कर रहे थे. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल. कितना अच्छा हमें हैबिट बना देना. प्रभु बोलते हैं, with every bite you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram. This doctors बोलते हैं ना 32 बार चबाना है ऐसे. You can do like this. प्रभु यहाँ तक बोले अगर आप ऐसा करते हो ना तो पूरा दिन खा सकते हैं प्रसाद. लेकिन साथ साथ हरे कृष्ण बोलते रहे. Tukaram Maharaj was just absorbed, and when some birds came, birds or animals, birds, okay, birds आए. Whose property is this? It belongs to Lord Vithala. ये पांडुरंग का है, जगन्नाथ का है. और कौन लेने वाले कौन है? उनके ही संतान है. हम बीज प्रदापिता. Very important in temple. The institute structure should know Jagannath is Lord Jagannath. Sometimes we think that Jagannath belongs to me or to our congregation only. You know, for the practical purpose we have management, so we have this mine and yours. But Jagannath is same, whether it's here or in Kerala temple or in Mayapur, Rajapur Jagannath, or Sheshadripuram Jagannath, or ICC Jagannath, or your home Jagannath. He's the same Jagannath. Otherwise, it will become like mine and yours. You know, same what happens in the material world. You have to see the Jagannath is same. So Lord, He just let them eat nicely. They are Lord Jagannath's children. If you see every living being as a son of God or daughter of God, the whole world will change. Russia, Ukraine, you know, border पे हरिनाम procession हो सकता. Ukraine soldiers embracing Russian soldiers, chanting like we do in the circle, you know. Imagine Ukraine, Russia holding hands, Putin and you know, just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So Tukaram Maharaj let them खाने दो जितना खाना है. और फिर he indicated to them, विहीर आहे इकडे, पाणी पाहिजे असेल तर ते पण घ्या. You want some water, you can drink some water. And the landlord, he came to me, was so angry, इतना गुस्सा हो गया. You rascal, अरे तेरे पे दया करके तुमको जॉब दिया और तुम पूरा ही हमारा, you know, paycheck लेके चला गया. You know, so much loss is there. She called immediately for a meeting of the पंचायत, सबको बुलाया, कंप्लेंट किया, देखो इसको हमने जॉब दिया और प्रिंसिपल अमाउंट भी जा रहा है, अभी हमारी खेती उजड़ गई. सबने बोला तुकाराम, you have to pay whatever the losses are there. आपको भरा. तुकाराम बोले yes, nothing is mine anyway. ये तो भगवान, हाँ, Lord will give.
The Lord wants to give, Prabhupada said, then with 100 hands, how much can you carry with 2 hands? The Lord wants to take, how much can you prevent? So he said, okay, you can, yeah, I will repay. Whatever is loss, I will repay. मैं पैसा दे दूंगा. तो बोले नहीं ऐसे नहीं, you have to put your house on mortgage. He signed house on mortgage. And then he went on, Jai Jai Ram Krishna Hari. अभी मैं होता तो एंग्जाइटी में होता है. The married person, he has 2 children, house is on mortgage. Hare Krishna. But he had faith. Actually, all problems in this world can be solved by faith in God. भगवान में श्रद्धा हो जाए. Krishna is with me. He's always with me. And he's guiding me. He's taking care of me, my family, my job, my responsibility. भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में बोलते हैं ऐसे, आमी तो तुम्हारा तुम्ही तो आमारा. प्लीज से, आमी तो तुम्हार तुम्ही तो आमार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? प्रसन्न प्रभु, आई एम योर्स, यू आर माइन. सब भगवान मेरे हैं. एंड एवरीबॉडी कैन से, सब बोल सकते हैं मेरा ही है ना. जैसे प्रसन्न प्रभु का कार है. व्हाट इज दैट कार? फोर्ड कार है. बहुत अच्छा मॉडल है. इनफैक्ट Prabhu got it, and after that they stopped producing. The last piece was kept for him, and he uses it in the service of the devotees. But now all can say Jagannath is mine, I am Jagannath. But सब नहीं बोलते Ford मेरा है. सब बोलेंगे तो चाबी एक ही के पास रहेगा ना. When it happened in Vrindavan, I told one devotee to get something on the 2-wheeler. I gave him the key, and by mistake he took another vehicle of the same model, and the key worked. और लेके चला गया. And then one person just came and asked, we had kept a vehicle here. I don't know. I didn't know. And then that devotee came back. Luckily, the owner was searching. And then after the devotee came, then I realized what had happened. So then I told him that I just keep the vehicle here. And then the owner, we told him, oh yeah, we found one vehicle. Is this yours? Oh yeah, thank you very much. He didn't know that we had taken same model and same place parking, and the key is working. ऐसा होता है क्या 2-wheelers में? हाँ? Nandanacharya Prabhu, you are expert at making duplicate keys. Once it happened in Prabhupada Leela. मालूम है आपको? Anybody knows the story? You know what story you know? Shyam Sundar Prabhu, yes. What happened? Bombay, yes, correct. आगे बोलो. Morning walk के बाद, so Prabhupada would come to morning walk. और क्या Prabhupada, Shyam Sundar Prabhu, they would drop Prabhupada to a certain point. Then he would morning walk and then would go in the car. It was an ambassador car. उस समय ambassador car बहुत popular होते थे. बड़ा पेट फुला हुआ structure. काम कम, size ज्यादा है ना. I don't know. And some people like it because it's comfortable to sit little bit, but not very efficient. That one ambassador car is in Mayapur, Prabhupada Samadhi ki Prabhupada used it. So Shyam Sundar Prabhu and others, they accompanied Prabhupada, and then they came back, and Prabhupada was trying to go in the car, and actually they opened the car also. Car mein बैठ गए. Somehow they opened, but the engine would not start, and Prabhupada was sitting inside. And finally the owner came. It was some other car actually. He said, what do you want? Oh, sorry, we are trying to take. Oh, this is my car. Sorry, sir. And then they asked Prabhupada, can we drop you somewhere? Prabhupada said, nahi, hamara car hai. Prabhupada said, there's a difference between India and Western country. Western country में ऐसा होता ना तो गोली से मार देते थे. और इंडिया में तो साधु को देख के चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा छोड़ दिया. तुकाराम महाराज, जय जय विठल, श्री हरि विठल, पांडुरंग विठल, पंडरीनाथ विठल, विठल 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 विठल. ट्राई करिए. विठल 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 विठल. अरे मैं हार गया. So you are just chanting faith.
If I had a drop of faith that great souls have, then our life would be successful. But then what happened is that the crop harvesting took place. जब फसल काटा गया और जो नॉर्मल प्रोडक्शन था उसका डबल हो गया ना, डबल राइट, बम्पर, बम्पर मीन्स डबल और मोर देन डबल. तो फिर कमिटी बुलाई गई, बोले नॉर्मल होता था इतना, दैट शुड बी गिवन टू द लैंडलॉर्ड एंड द एक्स्ट्रा विल गो टू तुकाराम महाराज. और तुकाराम महाराज, उसके भाई बहुत खुश है कि आपको डबल प्रोडक्शन मिल गया. तुकाराम महाराज ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया, हरि बोल हरि बोल, आज क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, आ जाओ आईसीसी में, आ जाओ ऑफिस के पास में, जिसको चाहिए लेके जाओ, जितना चाहिए कितना बड़ा बर्तन लेके आओ. वो लोग सब ले गए. उनके वाइफ तो पहले बहुत खुश थे, बाद में बोला ग्रेन एक्स्ट्रा कहाँ गया, बोला बांट दिया. काय रे वेड़ा मानस है ये ना, मैड हस्बैंड है ना. Once in fact she was so much, but although his wife was not devotee, she was serving a great devotee. ये भी है, भगवान के कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं. इतने महान भक्त को इतना कोऑपरेटिव वाइफ देना चाहिए था, ये ना एटलीस्ट, इतना एटलीस्ट. तो ये इसको कालिया बोलती है, शी इज सेइंग ये काय है, ब्लैक ब्लैक वन पत्थर है ऐसे बोलते है ना. Apparently non-devotee would use such words. Very, it looks like Krishna is not very rational or intelligent, If I were God, I would not do like this. But that's the reason you are not God. God's intelligence is much more than ours. Why Krishna created 84 lakh species? Why not 85? Why not 83? The question is, why are you asking why? You should not ask God why. God is perfect. Bhagwan jo bhi karta. तुकाराम महाराज फिर बस विठल भगवान का नाम ले रहे हैं, so much in ecstasy. And then again another job. अभी भी कुछ क्योंकि stability नहीं. Actually I was telling the story. Sometimes you would go to one mountain. You've been to Dehu, na? There's Bhandara Dongar और एक है two, three dongers. Bhandara Dongar and what is the name of the other mountain? The 2-3 mountains. Bhandara Dongar. Bhandara Dongar is very easy. The other one you have to climb, physically climb. And luckily there's no internet, no mobile signal there. You go there and chant. The Bhandara Dongar, he would go there, and once his wife, she would carry prasad for him. And she had a pin prick, like a thorn entered. So Lord Vithal personally came to remove the thorn. That's such are the dealings of the Lord. भगवान जो पुरोहित है, रोज आरती कर रहे हैं, उसको इतना कृपा नहीं दिखा रहे, लेकिन एक माता जी है जो पूरा विश्वास नहीं कर रहे, उस पर कृपा कर रहे हैं, because she is serving a pure devotee. Lord says, one who says I am my devotee is not my devotee. But the devotee of my devotee is my devotee. मेरे भक्तों का सेवन. This mood is essence of Krishna consciousness. Does not mean that we should not engage in deity worship or management or preaching. We have to do that also. प्रचार भी करना होता है, लेकिन क्या सोचना है कि मैं नहीं कर रहा, मैं गुरु महाराज की हेल्प कर रहा हूँ. I'm just assisting. So next he was given a job of, he was selling spices, mirchi. You know this story? मिर्ची बेच रहे. अनाउंसमेंट किया कि या मिर्ची उपलब्ध है, स्वस्त दामामध्ये आहे, हाँ, लो रेट, आइए. सब पूछते कि कितना दाम कितना है, बोले आपको रोज का दाम मालूम है ना, वही दाम है, एवरी टाइम का दाम मालूम. और समटाइम्स लोग मिर्ची डालने के बाद ना बोले थोड़ा और भी दो. तो मेरे को भी आदत थी बचपन में, टमाटर लेना तो 1 किलो टमाटर लिया, उसको बोले 1 टमाटर और डाल दो, है ना. The smallest. I would go in the evening. My mother would go and buy tomatoes. At that time, it was about 1 rupee per kg, 50 paisa per kg. अभी कितना है? 10 rupees? हाँ? 40 rupees per kg. Hare Krishna. That time was less than 1 rupee. So somebody would ask, please, after weighing also, give me something extra. बोले अरे भगवान का ये जितना चाहिए लो, कौन रोक रहा है? पैसे कधी यायचे पैसे? आए तर द्या, नाही तर पुढच्या वेळी द्या. ऐसे बैंगलोर में कोई दुकान है ऐसे ना,
You can pay later, need not pay, big bazaar, small bazaar, big bazaar, but big money also. So he take it. सब खत्म हो गया. And then one gunda came. Gunda समझते हैं आप ना? कन्नड़ा में गुंडा क्या बोलते? Gunda, yes. After all, the same culture. It's not that only one place people. Everywhere there are good people and bad people. So, Jai Shri Jagannath Swami. Speak of devotees of Lord Jagannath in Puri. There are countless stories. How many Jagannath Bhaktas are there? The Rajapur Bhaktas. Can you imagine? Total Krishna के भक्त कितने होंगे ब्रह्मांड में नहीं? Whole crores, ultimately everybody is a devotee. And how Krishna must be keeping account, that number 4,50,000 has to eat prasad now. 8,64,000 is having malaria now. How Krishna is keeping track of everybody. Who can understand God? How he can expand himself into innumerable heart of every living being. There's only one word to describe the Lord, and that is Achintya. His glories are Achintya. One may be able to count the number of particles of sand on the earth, number of stars in the sky, but one cannot count the number of qualities that Krishna has. Yes, Achintya. So, when Gunda came, एक गुंडा आया बोला कि मेरे को मिर्ची चाहिए, मैं यहाँ का बहुत प्रसिद्ध आदमी हूँ. सब लोग साथ वाले बोले हाँ प्रसिद्ध. किस लिए प्रसिद्ध बताया नहीं? फेमस, इनफेमस. तो कहा मेरे ले जाओ. तो बोले कि मेरे को बैग भी चाहिए. बोले ले जाओ. He went. And then afterwards, Tukaram Maharaj came back home very fast. His wife was very happy. बहुत खुश है कि बिक्री हो गया. हो बिक्री हो गया. पैसे कुठे आहे? पैसे नंतर येणार, तर आले तर बरं, नाही तर. Detachment बहुत मुश्किल होता. Money is the most, not the most, but one of the most difficult things to give up. That's why giving money to temple is very helpful. But then your heart becomes attached to Krishna. You are where you put your money, that we can know. पैसा कहाँ खर्च कर. So Tukaram Maharaj was detached. अभी Lord Vithal was worried. भगवान विठल को लग रहा था, अरे मेरे भक्त ने सब कर दिया, लेकिन अकाउंट क्लियर कैसे होगा? So Lord Vithal assumed the form of a servant. You have heard this story, no? He assumed the form of a servant and he went to all the people's home. सबके पास गए, उनका पूरा डेटाबेस था, एक्सेल फाइल, किसने कितना लिया. नॉक किया. कौन है? हाँ, देहू गावाचे सेठ आहे तुकाराम आणि मी त्यांच्या सेवक आहे, त्याचं माझं नाव विठ्ठल. There is a great rich person named Tukaram Maharaj, merchant, and I am his assistant. So what do you want? तुम्ही काय मिर्ची घेतला होता? आपने कोई मिर्ची खरीदी किया था? तो उसका हिसाब चाहिए. तो मिर्ची ना नहीं बोल सकते. हमने लिया था, लेकिन हमको याद नहीं है कितना लिया था. मेरे को याद है ना, पूरा याद है. देखो, 8 किलो लिया, तुम 6 किलो लिया, पूरा पैसा करेक्ट किया ना. फिर लास्ट में किसके पास गए? गुंडा. Anybody knows what happened with the गुंडा? तो गुंडा के पास गए, बोले आप दीजिए. गुंडा बोला मैं नहीं देता, मैं दिए नहीं. You know what Lord did to get the money? Hare Krishna. Now extreme step ले रहे. It's a very special design of the glass. मैंने कभी देखा ही नहीं है ना. It's like fat glass. Somebody must have designed with a fat belly, So ये था. But very nice. You can have a lot of water. The same space. It almost shaped like a mridanga also, He can play it also. So he went to the Gunda. The Gunda said, no, I am not giving. Do as you like. मैं नहीं देना. काय करायचे तुम्हें करून घ्या. So then the Lord, who has come as a servant, he took a rope and put it around his neck, own neck. भगवान ने अपने गले में डाला. अब बोला मैं अभी
अपने गले को फांसी लगा रहा हूँ और मैं बोल दूंगा, मैं लिख के जाऊंगा, इसने पैसा नहीं दिया इसलिए कर रहा हूं, आपके कारण से। तो फिर आसपास के सब लोग भी आ गए, वो सब बोले अरे आपके पास सब पैसे है, दे दो, आप दे दो, क्या है। तो भगवान उसने दे दिया पूरा वसूल के। भगवान साधारण नहीं है, वैसे कंसेशन नहीं देते, ये यथा माम प्रपद्यते। And then he brought all the money and he came to तुकाराम महाराज home. कौन आए? ओ, वो गांव है जहाँ पे आपने मिर्ची बेचे थे, उसका मैं प्रतिनिधि हूँ। I am a representative of the village where you sold the mirchi, the spice. तो क्या चाहिए? हाँ, मैं पैसे लेकर आऊँ। तो तुकाराम महाराज बोले कोई बात नहीं, हमको उतना जल्दी नहीं, आ भी जाता था। नहीं नहीं, आपको नहीं है, लेकिन हमें, हम क्यों फोकट में क्यों ले? We have money. He gave all the money. And suddenly Tukaram Maharaj felt inspired. He said, I want to buy some ghee. And please go and get some ghee. He told Lord, take this money and get some ghee. Ghee लेके आओ. उसने फिर उन्हें शीरा बनाया, हलवा. And Lord Shiva was passing by. Lord Shiva said, I will also join. ये परंपरा में ऐसे जाते जाते थोड़ा खा लिया ना, स्नैक. और just like today gulab jamun. We have one gulab jamun per person or two. I think 100 gulab jamun. Hopefully less people come, then we can get two also. But I did not eat it, but I thought it's really big gulab jamun. One is enough to satisfy, person like Prasanna Prabhu, who is always Prasanna. Anybody knows any else story of Tukaram Maharaj? We have 10 minutes more, 10, 15. The Abhangas were thrown, yes. इंद्राणी नदी में बहुत क्रिटिसाइज किए. एक्चुअली वन अदर प्लेस, वाघोली नाम सुना आपने? एयरपोर्ट के पास में. यू आर ऑल फ्रॉम पुणे, लाइक associates of Tukaram Maharaj. And then Acharya Prabhu and his good wife, they are really very dedicated servants. And they are here also. They're so fortunate to get association of all of. वाघोली में एक विलेज है, और वहां पे ना एक व्यक्ति उनको घर में बुलाया कीर्तन के लिए, पर उनके वाइफ ना कोऑपरेटिव नहीं, तो यहाँ पे उल्टा हो गया. तो क्या हुआ, तो जब बोल रहे हैं तुकाराम महाराज, what she did is she boiled some water, and as Tukaram was sitting, she put the entire bucket of water on Tukaram Maharaj. You heard this story? And Tukaram Maharaj, Jai Jai Ram Krishna Hari Vittala Panduranga Pandarinatha Vittala. He started crying loudly. And just somehow or other, he tolerated everything. Then very soon she contracted some very deadly disease reaction. And then of course, Tukaram Maharaj forgave her. वो माता जी को बहुत भयानक बीमारी हो गई, तुकाराम महाराज ने उनको ठीक कर दिया. Yes. Can you get that book which I was reading? Na? I want to show that book for the audience. Mumbai ji? चिंचवड़ से एक ब्राह्मण थे, ने तुकाराम को पीटा. Then what happened? He was beaten up by thorn, then also tolerated. He did not complain. And then the Lord, it happened to the Lord. तुकाराम महाराज जिसने उनको मारा, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उससे गए, उनकी सेवा की, उनका मसाज. We cannot even imagine. नहीं, because सपनों में भी ऐसे इमेजिन. मेरे कोई बुरा बोलेगा तो उसको मैं लाइफ टाइम कभी बात नहीं कर रहे. That's a minimum. We can think of other better ways to. Dadati pratigranati. Our formula is like this. There's one other interesting story of Tukaram Maharaj.
एक बार तुकाराम महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ के जप कर रहे थे, एक एनवियस पर्सन आया, उसने आके उसके मुंह के ऊपर थूक दिया, he spat on the face of Tukaram Maharaj, and Tukaram Maharaj he took bath, इंद्रायणी में स्नान करके आ गए और विठल विठल गाने लगे, कुछ बोले नहीं। फिर से तुक किया उसने 108 बार किया। कैन यू इमेजिन? एंड 108 टाइम्स ही टुक बाथ। तो फिर वो बोला कि व्हाट आर यू मेड ऑफ, क्या तुम पागल आदमी हो, 108 बार आपके ऊपर थूका, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। तो बोले कि एक्चुअली आप कितनी दया कर रहे हैं, मेरे को 108 बार स्नान करने का चांस मिला, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट, सो इज ऑलवेज सीइंग गुड। क्योंकि तुकाराम महाराज विलेज में आते हैं ना, कीर्तन करते रहते हैं और पूरी रात करते रहते। एक रात को कीर्तन कर रहे थे, वो धीरे धीरे लोग चले गए, लेकिन वो जब करते रहे और सुबह उठे तो खाली एक ही व्यक्ति बैठा था। तो तुकाराम महाराज इम्प्रेस हो गए कि अरे वाह, तुम कीर्तन करने में इतने उत्सुक हो, कीर्तन सुन रहे हो, मेरी कीर्तन कर रहे हो। नहीं नहीं, ये कारण क्या है कि ब्लैंकेट मेरा ब्लैंकेट था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई ब्लैंकेट। Nobody could match with Tukaram Maharaj's enthusiasm. And he's a grahastha devotee. जनरली सोचते हैं खाली सन्यासी होते हैं वही कथा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्शियसनेस के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर was grahast with 10 children, 64 rounds every day. I was talking to the neighbors. आपने भक्ति विनोद ठाकुर का घर देखा है मायापुर में, गोदरुम द्वीप? तो नेबर से बात कर रहा था, बताते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर बताते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जब जप करते हैं दीवारों से रोने की आवाज आती थी। The bricks would vibrate the sound. So it's, we cannot judge a devotee by ashram, by status, but we should become more and more pure. We cannot imitate. हमारा वो लेवल आएगा नहीं कि हम 108 बार स्नान करें, but at least we can. Actually interesting है कि एक बार एकादशी के दिन शिवाजी महाराज उनको मिलने के लिए आए। शिवाजी महाराज एक्चुअली वांटेड टू टेक सम गाइडेंस फ्रॉम हिम, है ना। तो एक्चुअली once it also happened that शिवाजी महाराज सब कुछ छोड़ के वहीं पे रहना चाहते थे, लेकिन तुकाराम महाराज बोले वापस जाओ टू डू हिज ड्यूटी। फिर औरंगजेब को मालूम पड़ गया कि शिवाजी महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए। अच्छा, शिवाजी महाराज डरे नहीं, बोले आप यहाँ पे रहो, कुछ नहीं होगा। फिर भगवान ने कैसा अरेंज किया, बहुत सारे शिवाजी दिखाई पड़ रहे थे, and so many Shivajis were there, and sometimes the Mughals decided beating each other. वो एक दूसरे को मारने लग गए, पता नहीं चला शिवाजी कहाँ पर है। शिवाजी महाराज की बहुत सारे कहानी, हालांकि शिवाजी इज नॉट एग्जैक्टली इन आवर परंपरा, बट इज ऑल्सो ग्रेट पर्सन। एक बार तो शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर दिया था औरंगजेब ने। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया मालूम है आपको? आगरा में थे, तो एक मिठाई के डब्बे में पैक होके वो बाहर निकल गए। I'm just, we are, we can gain inspiration how he is also one of the protectors of dharma, in one sense. तो तुकाराम महाराज एक्चुअली स्पाइस, शिवाजी के स्पाइस आके बोले कि बाहर जब वॉरियर्स घेर के बैठे हैं, तो तुकाराम महाराज ने परमिशन मांगा। तुकाराम महाराज, आई वांट टू गो, स्पाइस आर वेटिंग। तुकाराम महाराज बोले टिल द कीर्तन गेट्स ओवर नोबडी इज अलाउड टू लीव। कीर्तन पूरा होने तक कोई नहीं जा सकता। शिवाजी महाराज बैठे रहे और भगवान विठल ने उनको रक्षा की। और फिर क्या हुआ फाइनली, बहुत सारे शिवाजी दिख रहे थे उनको। लॉर्ड विठल टुक द फॉर्म ऑफ शिवाजी, एंड और क्या हुआ कि भगवान जब शिवाजी का रूप धारण करके बाहर निकले और सारे सैनिक उनके पीछे पीछे निकल गए, और असली शिवाजी अंदर ही बैठे रहे। तो वहां निकल गए। Okay, just 5 minutes more, and I will come to the departure of Tukaram.
एक बार क्या हुआ, तुकाराम घर में थे, उनकी पत्नी का नाम था जीजाबाई भी बोलते हैं, आवली। वो लक्ष्मी की पूजा कर रही। तो यार लक्ष्मी पूजा क्यों कर रहे? अरे बाबा घर में पैसा नहीं है, लक्ष्मी की पूजा करने। याद है मैं पहले जब स्कूल में था ना, तो मेरे एक फ्रेंड था, उसका रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट के ऊपर ना लक्ष्मी का फोटो रखते थे और नीचे कैश रजिस्टर। सूरज की अगरबत्ती ऐसे करते ऐसे करते। तो क्या कर रहे हैं, बोले हम प्रार्थना करें लक्ष्मी देवी ऊपर से नीचे आ जाए ऐसे डिसेंड। सो शी वाज वर्शिपिंग लक्ष्मी, कि लक्ष्मी को जो पैसा आना चाहिए। तुकाराम बोले कि देखो हमको विट्ठल की भक्ति चाहिए। तो मैं जीजा भाई देखो, तुम हस्बैंड की पूजा कर रहे हो नारायण की, मैं वाइफ की कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? तो कुछ ही दिनों में क्या हो गया, तो उसकी पत्नी को सब पैसा मिलने लगा, जो कपड़े, ग्रोसरी, लोन पेमेंट हो गया, मॉर्गेज वापस आ गया। तो फिर प्रसाद तुकाराम छोड़ के चले गए। जीजा भाई को बोला कि, ये बोला क्या हो, मेरे हस्बैंड चले क्यों? रोज कभी कभी चले जाते हैं, कभी एक हफ्ते बाद आते हैं, 2 हफ्ते बाद आते हैं, एक महीना वापस ही नहीं आए। वो बोले कि पंढरपुर गए। पंढरपुर में जाके ढूंढे, अरे मेरे हस्बैंड नहीं, 1 महीने से गायब है, क्या हुआ? 1 मंथ ओवर, माय हस्बैंड इज नॉट हियर। बोले हमें पता ही नहीं है। फिर विट्ठल भगवान में प्रार्थना कर रही थी, तो विट्ठल सपने बोले कि एक्चुअली आपके हस्बैंड देव में ही है, 1 महीने से कुछ खाया ही नहीं है। तो वहां देखा तुकाराम महाराज एकदम वीक हो गए हैं और भगवान कृष्ण का नाम ले रहे 1 महीने तक। फिर आंखें खोले तो उसको पूछा, वाइफ को, तुकाराम महाराज ने पूछा, वाई हैव यू कम हियर, क्यों आए? बोले आपको ले जाने के लिए, आपने खाया नहीं। तो बोले कि मैं अभी घर में नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपको पैसा मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया, मेरा ड्यूटी पूरा हो गया। तब फिर उसको थोड़ा बुरा लगा, उसने माफी मांगी, बोले कि हम, ठीक है एक कंडीशन है, जितना भी पैसा आया ना सब गरीबों को बांट दो। भगवान पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, कल के लिए कुछ रखना नहीं चाहिए। तो फाइनली उसने स्वीकार किया। नाउ वी कम टू द लास्ट स्टोरी, that is departure. Actually, रामेश्वर भट्ट करके था, रामेश्वर भट्ट, वो बहुत एनवियस थे। ये कौन है ये तुकाराम ब्राह्मण नहीं है और ये शास्त्रों का ज्ञान हमको सिखा रहा है। हाँ, ये कलयुग का लक्षण है कि शूद्र के मुख से भगवान का ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये, और उसमें एक्चुअली उसमें से एक था तुकाराम की नकल भी करता था। वो क्या करता था, अभंग है ना, जो तुकाराम ने लिखे है ना, तुका मणे, वो था सालू मणे। देखे आपने? एक वीडियो मूवी भी है तुकाराम के। तो वो है ना, वो क्या करता था, ही वुड टेक द सॉन्ग्स रिटन बाय तुकाराम एंड पुट हिज नेम, लाइक भक्ति विनोद कहे, तो ऐसे अपना नाम लेता था कि सालू कहे, है ना। तो उसका पेपर था, अपने असिस्टेंट को बोलता था कि आप लिखो, हाँ आप लिखो मैं बोलता हूँ। तो भजन गाते हाँ हाँ विठ्ठला ऐसे, और फिर उसको लेक्चर मालूम नहीं होता। उसका असिस्टेंट बोले बगा बगा आप देखो जस्ट सी, काय बगा, नहीं नहीं मनाचे डोळ्याने बगा, यू नो सी विद योर माइंड्स आईज। तो वो बहुत एनवियस हो गए, और रामदास रामेश्वर दोनों दोस्त मिलके तुकाराम महाराज को एकदम इंसल्ट करने लगे। और तो तुकाराम महाराज को बोलने लगे कि यू आर स्पॉइलिंग द वैदिक सिस्टम, ये वेद धर्म का नाश कर रहे हो। तुकाराम बोले कि देखो ये सब कुछ नहीं है, ये मैंने लिखा है अभंग, ये तो भगवान ने लिखा है। अगर आप सही में है तो, अगर सही में अभंग आपने लिखे, भगवान ने लिखे हैं, हम पानी में फेंक देते हैं और कुछ दिनों बाद अपने आप ऊपर आ जाना चाहिए। तुकाराम महाराज बोले यस। तुकाराम ने सब कुछ फेंक दिया, और वो एक नदी के किनारे, देयर स्टोन इज स्टिल देयर, यू नो, देवू, वो जगह है जहां से गाथा मंदिर, गाथा मंदिर। और आफ्टर 13 days he fasted, 13 days he fasted. On the 14th day his the granthas reappeared, they're completely safe. And then comes the last story, the glorious departure. Actually devotee का departure भी glorious है। I think it is on the day after गौर पूर्णिमा ना, तुकाराम बीज बोलते हैं। आप गए देहू में, वो पेड़ है, वो पेड़ है ना, उस दिन every year that tree shakes at 12 o'clock in the afternoon, the time when Tukaram Maharaj left, the special Muhurat, the day after Gaur Purnima.
And that's the day Srila Kadam Karan Maharaj also left. Very special day. So he was preparing when he came to know the Lord wants me to go. भगवान जाना, भगवान चाहते हैं, तो बस सब कुछ छोड़कर वह गए. भगवान ने उनको हिंट दिया और सारे अभंग पूरी रात भर अभंग गाते रहे. सबको बताया जाने का टाइम है, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम. और उसके बेटे का नाम था विठोबा महादेव, उसको गले लगाया और पत्नी को बोला आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना, आरएसी 1 पे 2 जाएंगे, है ना. तो और भी सबको बोला जिसको आने आओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं. पत्नी बोली मेरे को मशी, मेरी भैंस है, उसका ख्याल रखना. सबका मशी, किसी का लैपटॉप मशी बन जाता है ना, कि भगवत धाम जाने पर मेरे प्रोग्राम पूरा करना है. वी शुड नॉट बी अटैच. जो भी सेवा करना, लेकिन भगवान बोलेंगे आओ, तुरंत आ जाना. Because that also can, sometimes projects also become the cause of bondage, you know. We should not be attached to one particular service, the object of service. कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण बोले चलो प्रेसिडेंट बन जाओ, ठीक. कृष्ण बोले कल से तुमको टॉयलेट साफ करना, टॉयलेट. कल से कुछ मत करो, दरवाजे पे खड़े रहो, चप्पल स्टैंड में सेवा. कितने भाग्य की सेवा, चप्पल स्टैंड की नहीं, सबके चरणों की धूल लेना. तुकाराम महाराज सबको इनवाइट किए, लेकिन लास्ट पोएम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट पोएम बिड, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन है. बिड फेयरवेल टू मी नाउ एंड रिटर्न होम. हम जाते अपने गांव. इट्स हाई टाइम आई रिस्पॉन्डेड टू विठल्स कॉल. वैकुंठा नायक, भगवान मुझे बुला रहे हैं. विठोबा इज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. इट्स टाइम फॉर मी एंड आई विल डिसअपीयर. फिर एक सेलेस्टियल एयरक्राफ्ट. ही अमंग द रेयर पीपल हु वेंट सदेह, उन्होंने बॉडी को त्यागा नहीं, उनके लिए विमान आया, को साथ में ले गए. और जब गरुड़ जी, कुछ लोग बोलते हैं गरुड़ जी आए थे, कुछ लोग बोलते हैं प्लेन आया था, और फिर वो वापस भगवत धाम चले गए. तो कंक्लूजन यही है कि डिवोटीज लाइफ इज ऑलवेज फिल्ड विद टेस्टिंग, बट वन इज सिंसियर, ही विल पास द टेस्ट. तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृताम विपाकम. वन हु bows down to the Lord. विपत्ति आने पे, दुख आने पे भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये तो आपकी कृपा है, आई डिजर्व टू सफर मोर, जो भी आप दे रहे हो. भगवान बोलते हैं समुक्ति पदे धायबा, he is fit to go back to God. Whether you are हरिदास ठाकुर सन्यासी, तुकाराम महाराज गृहस्थ, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ, भक्तिदान ठाकुर सन्यासी, and all combination. पुंडरीक विद्यानिधि, richest man. Shridhar Kholavecha, very poor, very learned scholar like Roop Sanatan, or the South Indian Brahmin reading Bhagavad Gita. You just need one thing: sincere desire to serve Krishna and his devotee and to chant the holy name. Hari Naam lena hai, Vaishnav ki seva karna. Our ticket confirmed. So we'll have 5 minutes of sitting, 5 minutes of standing kirtan. Let us close our eyes and pray to Lord that we can follow in the footsteps of great devotees. ये महान भक्तों के पद चिन्हों में चल सके और हम हरि नाम कॉन्स्टेंटली गा सके. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. Please keep 31st of May free for Nirjala. Hopefully we can all join together from morning Mangal Aarti till what time is fast breaking? Next day. We cannot all be accommodated here, but as much as possible. Most of the devotees are staying nearby. You? See, so you should set the. We can have japa and then till afternoon. Yeah, right. Hari Bol. Krishna has sent Anirudh Prabhu to guide us. I will also try to come. I have to anyway meet some doctor also. So, but irrespective of me, everybody. कितने डिवोटी आएंगे अगर यहाँ पे जपा का प्रोग्राम रखा तो? हाँ. Let us do it this time with your cooperation. कितने डिवोटी आएंगे प्रभु जी? फिर से एक बार हाथ. हरि बोल. सुने बाबू, आपने हाथ ऊपर नहीं किया.
Where will you go? हाँ, गुलाब जामुन है रेडी, क्यों नहीं है? हाँ यार, वो हरि नाम पे गुलाब जामुन को 4-4 पीस ले सकते. Let us do 5 minutes of serious kirtan and then dancing kirtan. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Raise your hand loudly. Shri Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Loudly. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare. Hey Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare. Shri Gauranga. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna. Hey Gauranga. Together, very, very loudly. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hey Gauranga. Last time, very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Once again, very, very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Now we can have dancing kirtan. 5 minutes. Hare Krishna. Just like yesterday, 2 circles of Prabhuji, 2 small circles rather. Better than 1 big circle, 2 small circles. 2 for Mataji's, 2 for Prabhuji. Mataji's thoda can little forward. Yeah, Prasanna Prabhuji, sound ko thoda. बीच में कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. Two small circles. Hare Krishna. Some from one circle can go to another circle. 2 small circles. Half kar do, half. Hare, make 2 circles. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Can come this side little bit. Either right. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaurari. Gaura, 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 Hari.
Jai Satchinandana Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama. Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govindara Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnav Bhagavata Gita. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama. Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama. Sanghavindara Shri Madhusudan. Bolo Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Nitai Gauranga Gaurari. Jai Satchinandana Gaurari. Faster. Gaura 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 Hari. Jai Satchinandana Gaurari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna.